Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your computer class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your computer class. So class, in our previous session, as you all know, that we have completed chapter number 4, okay, and today we will start with the next topic, that is chapter number 5, learning to type. Okay, so this is the topic that I am going to start in today's session, that is chapter number 5, that is learning to type. This is learning to type. So what is the meaning of type? Type or typing? So all are you very well aware of it that we do typing on the computer. हम computer के ऊपर typing करते हैं. So how we do typing on the computer? By using the keyboards. Keyboards को use करके we type on our computer systems. Okay, so whatever the content you type, you will get it on your screen. Okay, so जो भी आप type करोगे वो आपकी screen पे आपको दिख जाएगा. So what is typing? So typing, देखिए here they have given a statement, sorry, a paragraph is also given about the meaning of typing. So typing is the process of inputting text with a device such as typewriter, computer keyboard or a mobile keypad by pressing its keys. ओके तो टाइपिंग क्या है? कंप्यूटर की कीज़ के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू अगर आप कुछ टाइप करते हो, सो दैट इज़ यूज एट टाइपिंग. तो ज़रूरी नहीं सिर्फ कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है उसके थ्रू, और यू कैन टाइप थ्रू द टाइपराइटर एज वेल, you can type through the keypad of your mobile phones as well. So all these things they are known as typing. Okay, so देखिए typing while visually searching for the individual letters and hitting the keys with one or two fingers is extremely boring and time consuming. देखिए बेसिकली जब न्यू हम बिगनर्स होते हैं, व्हेन वी लर्न टाइपिंग, हम एक एक वर्ड को, एक एक अल्फ़ाबेट को ढूंढ के वी जस्ट टाइप वन 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 एंड वन, एक एक वर्ड को ढूंढ के हम टाइप करते हैं. तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड इट इज़ क्वाइट वेरी बोरिंग to search each and every alphabet and then type. Okay, and in spite of using your 1 or 2 fingers for typing, okay, you can use all your 10 fingers for the typing process. Okay, and that is more efficient as compared to the typing that we do with the help of our 2 fingers. तो अपनी 2 फिंगर्स की हेल्प से जो हम टाइपिंग करें 1 या 2 फिंगर्स की हेल्प से, उसकी कंपैरेटिवली अगर हम अपनी 10 की 10 फिंगर्स को यूटिलाइज करें फॉर डूइंग द टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड और द टाइपराइटर, दैट इज typing. So basically in this we are talking about the typing through the keyboard, computer keyboard. तो basically हम इसमें computer keyboard से जो typing करनी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. Okay, so how you can type with the help of your 10 fingers. So typing with all the 10 fingers is a skill like riding a bicycle. The more you do, the faster and the better you get. 1 or 2 finger typing is like riding with your feet on the ground. There is no learned skill and it leaves you frustrated when the other one rides up. तो देखिए 10 फिंगर्स के साथ टाइप करना ऐसा है कि जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो. सपोज आपने अभी नई नई साइकिल चलानी सीखी है, सो ऑब्वियसली आप गिरोगे, स्लो चलाओगे, गिरोगे, ठोकोगे. ओके, बट एक आपके साथ का फ्रेंड है जिसको जो साइकिलिंग बहुत अच्छे से आती है, एंड वो तो टैक्सी साइकिल विच ही विल राइड ऑन एंड देन ही विल जस्ट गो वेरी फास्टर एंड फास्टर. तो आपको देख के थोड़ा गुस्सा आएगा कि मैं क्यों नहीं चला पा रहा, आई एम टेकिंग सो मच टाइम फॉर दिस सिंपल थिंग. सो बेसिकली जस्ट लाइक दैट टाइपिंग इज ऑल्सो लाइक दिस. ओके, सो टाइपिंग कैन बी इम्प्रोवाइज्ड ओनली व्हेन, जो टाइपिंग है आप अपनी इम्प्रोवाइज कर सकते हो तभी जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे. ओनली बाय डूइंग द प्रैक्टिसिंग, ओनली बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर टाइपिंग. सो नोबडी कैन टीच यू द टाइपिंग. तो टाइपिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता. ओके, वी कैन टेल यू द सम, हम आपको कुछ कहते हैं बेसिक की एलिमेंट्स बता सकते हैं. वी कैन टेल यू द बेसिक की एलिमेंट्स that where you have to place your fingers, but nobody can increase the speed of your typing unless and until you do the practice. So you can improvise the speed of your typing only by using the 10 fingers and just keep on practicing. So देखिए practice makes a man and perfect, you must have heard about it. Similarly, so if you do more practice of typing, so definitely your typing speed is going to be increased. So I'll just give an example of the mobile phones. So earlier when we were using the mobile phones, so we used to type 1, 2 and this and that alphabet. But now we are now
we are so much used to our mobile phones that we can type, sometimes we can type without even looking at the alphabets. बिना अल्फ़ाबेट्स पे देखे भी हम केवल टाइपिंग कर सकते हैं. So this is how, okay, the practice of typing increases your speed. So here they have given some key features. So this chapter includes the basic typing which are very essential in the today's world. Okay, for the usual tips or as follows. So देखिए इन्होंने बोला कि इस चैप्टर में हम बेसिकली हमने किस बारे में बात की है, अवॉइड लुकिंग एट द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग. So if you want to be a perfect in typing, so जब whenever you type on the keyboard, so just avoid looking on it. तो कीबोर्ड के ऊपर कम से कम देखो. Okay, so just avoid looking at the keyboard. Second is place your forearms slightly above the keyboards. Okay, तो आपको अपने जो आर्म्स है, फोर आर्म्स है, इसको अपने कीबोर्ड के ऊपर रखना है. And third is press the keys softly. Third is, so whenever you type, press the key very softly. टक 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 जोर जोर से आवाज़ करोगे तो obviously your keyboard is going to stop after some days. Okay, it will not work so long. Fourth is place your fingers on the keyboards and always place your fingers on the keyboards. तो देखिए these are the basic four key elements that you have to keep in your mind whenever you do the typing. The first of all you can do place your forearms on the keyboard, then press the keys very softly. Then okay, and whenever you do typing, so just avoid looking at the keyboard. So just आपने देखा होगा जो बेसिकली जो प्रैक्टिस जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज होते हैं टाइपिंग में, वो जल्दी देखते नहीं, स्पेशली इन द कैफ़ेज एंड द साइबर कैफ़ेज यू मस्ट हैव सीन, कि उनको कीबोर्ड पर देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बिना देखे वो टाइपिंग कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज टाइपिंग. नेक्स्ट इज प्लेस योर फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड्स. so you have to place your all the fingers on the keyboards. ओके, नाउ वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ योर कीबोर्ड्स. तो देखिए इसमें बेसिकली आपको बताया गया है. सो इन द ऑनलाइन क्लास आई हैव शोन यू, मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया था कि जो आपकी फिंगर्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी. देखिए नो बडी कैन टीच यू, मैं आपको बोलती जाऊँगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. ओनली देन आई हैव शोन यू द विजुअल फोटोग्राफ. तो मैंने आपको अलग अलग कलर्स में डिवाइड होकर बताया था कि क्या उसी फिंगर किस चीज़ के लिए, कौन से अल्फ़ाबेट के लिए हम यूज़ करते हैं. सो देखिए द नेक्स्ट पेज इज़ द होम कीज़. सो बेसिकली वी हैव टू प्लेस आवर फिंगर्स ऑन द होम कीज़. तो बेसिकली हमारी जो फिंगर्स हैं वो हमारी होम कीज़ पे रहती हैं, एंड फ्रॉम देयर दे मूव अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट. So हमारी the fingers are always placed on the home keys, and after that we press the keys upward, downward, on the left or the right, wherever it is required according to our what we call it, हमारे the typing content. Okay, so it is important to position your hands on the keyboard correctly. Your fingers must be in the middle row of your keyboard, which are known as the home keys. So middle row of the keyboard, so this middle row, so you can see here in this picture some highlighted alphabets are there. तो ये जो रो highlighted है, इस रो को हम क्या बोलते हैं, that is known as home keys. Okay, so आपकी हर फिंगर की पोजीशन उन होम कीज के ऊपर होगी. Okay, starting with your left hand, place your little finger on the A key. So आपकी okay, so you have fingers. सबसे पहले उसके की कौन कौन सी फिंगर्स कहाँ पे होगी. So basically you must know what are the fingers. So this is little finger, this is ring finger, this is middle finger, this is index finger, and this is thumb. Similarly, thumb, index finger, middle finger, ring finger and little finger. तो ये हमारी fingers को हम इनके नाम हैं. Okay, so you have to place your fingers on the home keys, that is the middle row on the keyboard, and then you have to press all the keys. Okay, so आपकी home keys पे positions क्या हैं. Starting with your left hand, place your little finger on the key A. So left hand से अगर हम start करें, so little finger will be on the alphabet A. तो हमारी little finger alphabet A पे होगी. Ring finger on S. Ring finger will be on the alphabet S. Okay, and middle finger on the alphabet D. Middle finger will be on D. A S D. Index finger on F. A S D F. And the last thumb is on space bar. तो हमारा जो space bar होता है that should be there. Next, from the right hand side, with your right hand place your index finger on 1. Okay, on J. So index finger, this is the index finger. Okay, so index देखिए तो दोनों हमारे जो thumb है, they both are placed on the space. तो दोनों के दोनों जो हमारे thumb है, they are placed on the space bar. Then index finger of the right hand will be placed on alphabet J. Middle finger will be placed on the alphabet K, and ring finger will be placed on alphabet L. And your little finger be on the next key. तो देखिए L के बाद क्या हमारी जो कुछ some dots and enter keys is there. So we use it for this purpose.
So this is the basic home position where you will place your fingers, that is known as home keys. Clear? Now ओके सो नाउ देखिए बाकी जो हमारे चैप्टर्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 है. सो दिस ऑल इज जस्ट द पोजिशनिंग, नथिंग इज. सो वेयर यू हैव टू प्लेस योर फिंगर्स. सो आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द लास्ट सेशन. सो व्हाट इज द चार्ट. तो देखिए आपको कलर वाइज मैंने बताया था कि किस फिंगर से आप कौन कौन सी कीज़ को यूज़ करोगे. ओके सो दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट इट इन द ऑनलाइन क्लास. ओके and that's it from the chapter only. This chapter में कुछ खास नहीं है बेटा. Basically what is typing and how you can place your fingers, this is the most important thing. So nothing is there. Okay, so this is basically just an introduction. Basically आपको इसमें typing का meaning and home keys आपको पता होनी चाहिए. The rest is sick. Clear? चलिए. Now we'll move to the self evaluation of the chapter that is given at page number 47. So now we will do the self-evaluation, that is self-evaluation. So certain points are given in the self-evaluation. After reading the chapter, I know these points. So now we have to read the chapter and see whether we know these points or not. So the first is, I know that typing is a process wherein text is input with a keyboard. Okay. तो मेरे को पता है कि टाइपिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम टेक्स्ट टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड की हेल्प से हम जो टेक्स्ट है उसको टाइप करते हैं. डू यू एग्री विद दिस? येस, डेफिनेटली वी एग्री विद दिस, बिकॉज वट एवर वी टाइप विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड ओनली. तो हमें अगर अपनी स्क्रीन पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कुछ भी टाइप करना है, सो यू हैव टू प्रेस द keyboard keys that is on your computer keyboard for typing any kind of context. Okay, चलिए moving next to the second one. Okay, this is second one. I know that we should avoid looking at the keyboard while typing. Yes, so whenever we type on the computer keyboard, we should avoid looking at the keyboard. हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर बिना देखे टाइपिंग करनी चाहिए. That will improvise, only then you can improvise your typing speed. Third is, I know that we should press the keyboard key softly. Okay, और देखिए अभी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे जो कि आपको बहुत ध्यान रखने हैं. So these all are from there only. I know that we should press the keyboard keys softly. तो हमें जो कीबोर्ड की कीज़ हैं उसको बहुत ही सॉफ्टली प्रेस करना चाहिए. So do you agree with the statement? Yes, we definitely agree. That is also agree. Next, I know that learning to type with all the fingers will increase the productivity. So when you will learn the typing with all your fingers, all your 10 fingers, so that will increase the productivity. Productivity means you can do that given work at a very less time. आप कोई भी काम बहुत ही कम टाइम में easily कर सकते हो with less energy. Okay, and you can do it very fast. आपका टाइम कंजम्पशन कम होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. So yes, the productivity is definitely going to improvise. So this is with this also we agree. Next, now as I have told you in the online class, the map I have shown you. Okay, sorry, the photo I have shown you कि मतलब मैंने आपको कलर्स वाइज बताया था कौन सी की के ऊपर कौन से हैंड्स होंगे. तो देखिए कौन सी फिंगर्स होंगी, हैंड्स नहीं फिंगर्स होंगी. So the first is tick the correct answer. So now we are starting with the exercise. So first is tick the correct answer. Tick the correct answer. Tick the correct answer. Okay, so this is the first one. The first is, which finger is used to type the character SWX? So SWX को टाइप करने के लिए, so which finger we use? So we will use our ring finger of the left hand. Okay, so which finger we will use for typing the text SWX? That is ring finger of the right hand, sorry, the left hand. So write down, so tick the correct option number 2, that is ring
finger, that is ring finger. Moving next to the second one. Sorry, this is A and B. Okay, 1 2 में नहीं दिया, A and B में दिया है. So this is A. Moving to the B1. Which finger is used to type the characters A, Q and Z? So A, Q and Z को टाइप करने के लिए हम कौन सी फिंगर यूज़ करेंगे? So we will use the little finger of our left hand. So the answer is again option number 2, that is little finger. That is little finger. So we will use little finger of our hand, okay, for typing this alphabets on the keyboard, that is A, Q and Z. Next is, which software program is used to type text? Okay, text type करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? So basically for typing a text we use WordPad और MS Word. Okay, so for text document को टाइप करने के लिए हम कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं? We use MS Word. So that is also option number 2, that is MS Word. We use MS Word. हम क्या यूज़ करते हैं? We use MS Word. Moving next to the D1. The D is, your fingers must be in the middle row of your keyboard known as. तो जो आपकी फिंगर्स हैं, जो आपकी कीबोर्ड के मिडिल रो में होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? द कीज़. ओके, जहाँ पे हम अपने कीबोर्ड पे जहाँ पे मिडल्स में जो हमारी मिडिल रो होती है हमारी कीबोर्ड की, जहाँ पे हम अपने फिंगर्स को रखते हैं, व्हाट इज़ दैट नोन? दैट इज़ नोन एज होम कीज़. वी टर्म इट एज होम कीज़. तो लिखिए डी का फर्स्ट वन, दैट इज होम keys. The middle row of the keyboard, the middle keys of the keyboards are known as home keys. Okay, so these are the answers for the tick the correct options. चलिए, moving next to the fill-ups. The next is fill in the blanks. The next is fill-ups. The next is fill in the blanks. So now we will begin with the fill-ups. So the first is, that is A1. Dash is a process of inputting text with the keyboard. So whenever we input text with the help of keyboard, what we call it? So जब अपने fingers की help से जो हम text type करते हैं, so what we call it as? So we call it as typing. So typing is a process of inputting text with the keyboard. So dash is the process of inputting text with the keyboard. So we do typing. हम typing करते हैं, कीबोर्ड से जब हम typing करते हैं तो text input करते हैं, that is known as typing. So the answer for the A1 is typing. TYPING, that is typing. Moving to the B1. The B is, you can press the space bar with your dash. So हम अपने कीबोर्ड के ऊपर जो स्पेस बार है हम उसको कैसे प्रेस करेंगे? So we will press space bar key with the help of our thumb. We will press the space bar with the help of our thumb. That is answer for the B blank. That is thumb. THUMB. That is thumb. Okay, you can press the space bar with your thumb. THUMB, thumb. C1, avoid looking at the dash while typing. So whenever you type, so you should avoid looking at the keyboard. So जब भी हम टाइपिंग करते हैं हमें कीबोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए. So this is the first one. Avoid looking at the dash while typing. So avoid looking at the
keyboard. So avoid looking at the keyboard while typing. Avoid looking at the keyboard while typing. D1. The D is your fingers must be in the middle row of your keyboard known as. तो जो आपकी फिंगर्स है जो उसके कीबोर्ड के मिडल में होती हैं, सो व्हाट वाज दैट दोज कीज कॉल्ड. और इन सिंपल जहाँ पे अपनी फिंगर्स हम रखते हैं, सो वेयर वी पुट आवर फिंगर्स ऑन द मिडल रो ऑफ आवर कीबोर्ड, सो व्हाट वी कॉल दोज कीज. सो वी कॉल देम एज होम कीज. वी कॉल इट एज होम keys. Okay, so your fingers must be in the middle row of your keyboard known as home keys. That is option number 1. Okay, sorry, not option. Okay, so we call it as, sorry, not your fingers, the position of your fingers back on the dash after pressing any key. ओके, तो देखिए जो मिडल रो है उसको हम अपनी होम कीज बोलते हैं. सेकंड थिंग इज, सो व्हेन एवर यू आर टाइपिंग, देखिए आपकी जो फिंगर्स हमेशा होम की पे होनी चाहिए, तो टाइपिंग करती ऊपर नीचे जाती हैं. बट वंस यू हैव कंप्लीटेड टाइपिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड और अल्फाबेट, देन यू शुड ब्रिंग डाउन योर कीज बैकवर्ड टू द सेम पोजीशन. टाइप करके वापस आके आपको अपनी जो कीज़ हैं, अपनी हैंड्स हैं, वो वापस उसी होम कीज़ के ऊपर रखनी है. ओके, सो यू हैव टू प्लेस योर हैंड ऑन दी होम कीज. दैट इज होम, HOME, home keys. That should be placed on your home keys. Your hands should be placed on your home keys. So position of your fingers back to the home keys after pressing any key. Check. Moving next to the third one, write T for true and F for false statement. So now we are beginning with the true false. तो देखिए हम ऑलरेडी बेटा ये चैप्टर हम ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में आपको डिस्कस कर चुके हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद द बैक एक्सरसाइज. द नेक्स्ट इज ट्रू false. Okay, so the first is typist should not avoid looking at the keyboard while typing. This is the first here. So write down the first true false. That is, typist should not avoid looking at typist should not avoid looking at the keyboard while typing. Okay, so this is the first. So is it true or false? So a typist should always keep his eyes on the keyboard. So is it true? So in the other terms it is saying जो typist है उसको अपनी हमेशा fingers keyboard पे रखनी चाहिए. So is it true? No, this is false. A typist should avoid looking at the keyboard while typing. So this statement is completely true. So typist should not avoid looking at the keyboard while typing. So this is a false. This is a false statement. So write down false. FALSE. Okay, this is false. Moving next to the second one. The second is place forearm slightly above the keyboard. Place forearms. Okay, this is forearms means आगे वाले हाथ. Forearms चार हाथ नहीं, four, FORE, forearms slightly above the keyboard. Slightly, SLIGHTLY, slightly above. Place forearms slightly above the
keyboard. Place forearms slightly above the keyboard. So is it true or false? This is true. So we should place our forearms slightly above the keyboard. So keyboard के ऊपर अपनी forearms रखनी है. Okay, so we should place it there. So this statement is true. This is true. T-R-U-E, true. Okay, place forearms slightly above the keyboard. That is true. Moving next to the third true false. Okay. Spacebar key should be pressed with the little finger of your right hand. Spacebar key. Space bar key. Spacebar key should be pressed. Should be pressed. Spacebar key should be pressed with the little finger. With the spacebar key should be pressed with the little finger. With the little finger of your right arm. Of your right arm. It means that spacebar key जो है हम we should press it with the little finger of our right arm. So we should do we use this finger to press the spacebar key? No. Spacebar key is always pressed with the help of the thumbs of both the hands, whether it's left, whether it's right. Okay. So spacebar key is always pressed with the help of the thumbs of the right hand and the left hand. So this statement is false. So this is a false statement. This is false. Spacebar key should be pressed with the little finger of your right hand, right arm. That is false. First is false, second is true, third is also false. Chaliye. Okay, so this was the true false. Next is question answers. Okay, so that we will do tomorrow. But one thing that I want to ask. So as you can see on the page number 48, so you can see here they have given the pictures of two hands. Okay, यहाँ पे दो hands की picture दी हुई है. Now what you have to do is, you have to write the name of these fingers. Okay, आपको fingers के name लिखने हैं. Okay, this is thumb, then index finger, middle finger, ring finger, little finger. Similarly, this side as well. This is thumb, index finger, middle finger, ring finger, and little finger. So you can see the spellings. Okay, still if you will be having any kind of doubt, so you can see it from here. आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा. That is given at page number 43. So you can see it from page number 43. तो यहाँ पे पूरा mention किया हुआ है. So here they have mentioned the name of all the fingers of your hand. देखिए fingers सबकी चाहे left hand की हो चाहे right hand की हो, जो fingers हैं वो सब same ही रहती, जैसे कि they both are little fingers, they both are ring fingers, they are middle fingers, they are index finger, and they are thumb. Okay, so this is the name: thumb, index, middle, ring, and little finger. So their name is same, but left and right hand are अलग. Okay, चलिए. So especially for this topic, make sure that you attend the online classes. And this is the true false. You can pause it here and note it down in your notes. Okay, the next is the question answers and labeling the home keys in the keyboard. So that we will do in the next session. Okay, now इसको तो आप कर सकते हो. So you have to mention the name of all the fingers. Okay, you can also mention the home keys. So आपको यहाँ पे keyboard देखते हुए आपको बताना ये home keys कौन सी हैं. So you can see it from here. देखिए home keys कौन सी होती हैं. These all are home keys. That is A, S, D, F, J, K, L, dot, enter, caps lock, space bar.
दीज ऑल आर होम कीज, जहाँ पे हम अपने जो फिंगर्स के बाकी रखते हैं. ओके, चलिए. So this is from my today's session class. With this, I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in the next session. So till then, everybody, have a great day.